Hello students, good morning to all of you. Dear students, I hope you all are fit and fine. Students, today we will start our English grammar topic determiners, which we have discussed about determiners and its types. So first article we have done. Today we will start our second kind, demonstrative determiners. These are four in number. These are four in number. These refers to person or thing near the speaker, and that and those too far off. Okay, this and these refer to person or things near the speaker, and that and those too far off. This and that used for singular, and these and those are used for plural. You can see here the example. This car is very beautiful, and car here is, if we are using here this, it means we are talking about the near thing. Okay, so car, and car is singular one thing, so we are using here this is demonstrative determiners. Aditi lives in that house. It means we are talking about the far thing. These books are yours. These books are yours. Distribute these mangoes among those children. Distribute these here means plural. This and these point to the object which are near, which we have discussed about it. And next, possessive determiners. Possessive determiners, these are my, are, your, his, her, its, their, one's. These are possessive forms of pronouns. These are possessive forms of pronoun. Okay, जैसे कि subjective क्या होता है इसका, I, we, you, he, she, it, and they have the possessive form my, our, your, his, her, its, and their respectively. For example, they are used before singular and plural to indicate relationship or possession. दे आर यूज, यानी कि जो ये वर्ड्स हैं हमारे जो पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं वो कहाँ यूज होंगे, बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल रिलेशनशिप के लिए. ठीक है, जैसे कि माई मदर इज अ टीचर. माई मदर हियर इज सिंगुलर, लेकिन पजेशन है मेरा कि वो मेरी मदर है. माई मदर इज अ टीचर. आर स्कूल हैज़ 50 रूम्स, तो आर स्कूल, इट मीन्स स्कूल एंड और देर इज अ रिलेशनशिप. योर फादर इज कॉलिंग यू. हिज बैग कंटेन्स मैनी ऑब्जेक्ट्स. Her books lie scattered in the room. The house is double-storied. One must do one's duty. One must do one's duty. We saw her house. Next, definite numeral determiners. Definite numeral determiners. These जैसे कि 1, 2, 3 etc. These indicate a definite number of object or person. ये जो है ये क्या इंडिकेट करते, क्या इंडिकेशन देते हैं कि एक डेफिनेट नंबर, ऑब्जेक्ट का एक डेफिनेट नंबर हमें बताते हैं. जैसे 1, 2, 3. 1, 2, 3 कौन से होते हैं, हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं. जो डेफिनेट नंबर्स होते हैं वो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. कार्डिनल जो कि काउंटिंग से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 एट्सेट्रा, एंड ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. जैसे द बैगर इज ब्लाइंड ऑफ वन आई. शी हैज़ 2 daughters. तो जो 1, 2, 5 boys are sitting on that bench, and 5, these are the definite cardinal numbers. Okay, and ordinal numbers like first, second, third etc. refers to the position of series. And the girl in the third row is my cousin. अब क्या आ गया, थर्ड रो, इट मीन्स दिस इज द ordinal number. Okay, the man in the first room is our warden. Next is some, any, no. Some, any, no, indefinite. वो डेफिनेट नंबर बता दिया, हमें पता चलेगा कि फर्स्ट, सेकंड, 1, 2, 3. लेकिन सम, एनी एंड नो इनडेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स हैं हमारे. इनडेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स हैं. Some is generally used in affirmative sentences. Some generally we use it in affirmative sentences, but no and any are used in negative and interrogative sentences. Some is used with plural countable noun as well as uncountable noun also.
What? Some is used with plural countable noun as well as uncountable nouns. For example, the doctor gave the victims some medicine. Uh, the doctor gave the victims some medicines. Here are some flowers. Here are some flowers. It means some we will use in affirmative sentences. Some is used in offers and request when we expect a yes or no answer. Sometimes we use for offering and for request. For offering and request. Some is used for offering and request when we have to give the answer in yes or no. Would you like some coffee? अभी देखो हमने क्या कहा कि no or any for in negative and interrogative sentences we will use these, but only just for request and offering we will use some word also. Okay, would you like some coffee? No, thank you. Just we have to give the answer yes or no, then we will use some just for offering and request. There is no post office in this colony. यानी कि negative sentence here we are using no, and no is here indefinite numeral determiners. I have no friends in our class. We have invited some TV anchors to the show. We have invited, it means it here this is the affirmative sentences. There is still some milk in the jug. There isn't any sugar in the pot. Have you any books on western music? Study the use of some and any in the following context. Some may be used to indicating request or invitation. जैसा कि हमने पहले बता दिया, offering or request we will use some. Otherwise in affirmative sentences we will use of some, and in negative and interrogative sentences we will use no or any. Any is used before plural noun as well as uncountable nouns. It's often used negative or in interrogative sentences. Okay. यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि नोट क्या है, वी यूज़ एनी आफ्टर हार्डली, बेयरली एंड स्कार्सली. जो एडवर्ब्स होती है जब हम टेंस करते हैं तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम इन एडवर्ब्स का यूज करते हैं. अगर ये एडवर्ब्स आपको देखने को मिलती है तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. तो एनी कहता है कि हम एनी को यूज़ इन एडवर्ब्स के बाद करते हैं, हार्डली, बेयरली एंड स्कार्सली, क्योंकि ये जो है वर्ड्स हैं ये नेगेटिविटी की सेंस देते हैं. ही हैज़ हार्डली एनी मनी ऑन हिम. देर इज़ हार्डली एनी सुगर इन द हाउस. आई हार्डली go there. She has barely any beautiful dress. He has scarcely any friend in this new city. Means these words give us negativity. In case there is some doubt, we use any after if. As if you need any help. इसके बाद एक और डाउट है हमारे पास, जब हम यूज करते हैं any का आफ्टर if तो क्या है, if you need any help, if you face any difficulty, press this button. Don't hesitate to seek my help. If you face any difficulty, don't hesitate to seek my help. Some with a countable plural noun indicates an unknown or indefinite number. Uncountable noun some means an indefinite quantity as. ये कुछ नोट है, जैसे कि हमारे एक्सेप्शंस होते हैं ना, रूल के एक्स्ट्रा एक्सेप्शन आते हैं हमारे, तो एक्सेप्शंस है ये हमारे. सम विद अ काउंटेबल प्लूरल नाउन इंडिकेट्स एन अननोन और इनडेफिनिट नंबर. अनकाउंटेबल नाउन सम मीन्स एन इनडेफिनिट क्वांटिटी एज. सम बॉयज वर हर्ट इन द बस एक्सीडेंट. नंबर. सम पर्सन्स ऑलवेज स्पीक इल ऑफ अदर्स. ये तो देखो बॉयज एंड पर्सन्स, इट मीन्स इन नंबर. But I bought a notebook and some paper. It means here there is a quantity. He wants a pen and some ink. He wants a pen and some ink. It means here it is also a quantity. I hope you are getting my point. Next, all and both. This is also indefinite numeral determiners. All denotes the total of many units together, while both shows the total of two. शी गेव मी ऑल द एप्पल्स. देखो ऑल तो है वो पूरी यूनिट को
इकट्ठा कंबाइन करके वो हमें बताएगा कि ऑल थिंग्स वी हैव, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास बट बोथ ओनली जस्ट द total number of 2. For example, she gave me all the apples. All the boys are playing now. She gave me यानी कि जितने भी एप्पल्स उसके पास थे, she gave me all. All the boys are playing now. Both Ajay and Vijay. It means in this sentence we are just talking about two persons are fine cricketers. Both father and mother are at home. All is used to refer a number of person or thing considered as a group. अगर हम as a unit की group की अगर हम बात करें then we will use all. All requires a singular verb when followed by an uncountable noun. All water here is safe to drink. Both is used with plural and countable nouns. Plural भी रहेगा और countable noun रहेगा. It is used when there are two people or things of the same kind. Both boys went trekking. Both friends were present. After that कुछ फिर वही नोट आएंगे हमारे, जैसे कि द इज यूज्ड आफ्टर ऑल एंड बोथ बट बिफोर होल. ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास. बोथ द फ्रेंड्स रिफ्यूज टू पार्ट. कहता है कि द इज यूज्ड आफ्टर ऑल एंड बोथ. ऑल वर्ड और बोथ वर्ड के तो आफ्टर हम क्या यूज करेंगे, दो वर्ड, बट होल से बिफोर हम यूज करेंगे. जैसे कि मैं कहूँ द होल विलेज वॉज ruined इन द फायर. दिस इज द नोटेबल थिंग माई डियर स्टूडेंट्स, so you will note this thing. After all and both we will use the word, and before whole we will use the word. Okay, all is used with both countable and uncountable nouns. All is used, all का यूज है वो दोनों के साथ होगा, countable and uncountable nouns. But all my books have been torn. All the milk turned sour. नेक्स्ट आता है हमारा वन अनदर, अदर. तो वन इज यूज इंस्टीड ऑफ ए और एन इन मोर एम्फेटिक वे. देखो ए और एन जो हमने अ और एन यूज किया था आर्टिकल में, उनका मीन भी वन थिंग को ही रेफर करता है. बट यहाँ पे जब हम वन वर्ड यूज करें ना, ओ एन ई वन, इट मीन्स वी आर गिविंग द इम्फेसिस. ठीक है, इम्फेसाइज कर रहे हैं हम. जैसे कि दे वर डिस्कसिंग वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर. They were discussing one problem after another. Another is used with singular countable nouns. Another is used with singular countable nouns to refer to an additional person or thing. Another कहाँ यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ होगा, नाउन काउंटेबल भी होगा आपका, और एक एडिशनल पर्सन और थिंग को ऐड करेगा. जैसे कि वन पैसेंजर वॉज किल्ड एंड अनदर 5, ठीक है, वर इंजर्ड. जैसे कि एक पैसेंजर तो किल हो गया, उसमें एडिंग कर रहा है वो क्या कि अनदर 5 वर इंजर्ड इन अ बस एक्सीडेंट. उसके बाद आता है वन हो गया, अदर हो गया, अनदर हो गया, अदर. अदर इज नॉर्मली यूज विद प्लूरल नाउन्स. ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनदर, बट अदर इज नॉर्मली यूज विद प्लूरल नाउन्स. अदर पीपल वर इन्वॉल्व इन इट. ठीक है, अदर पीपल वर इन्वॉल्व इन इट, यानी कि जो फॉर प्लूरल वी विल यूज दिस थिंग अदर वर्ड. ओके, नेक्स्ट हमारा मच एंड मैनी. यू नो वेरी वेल अबाउट मच एंड मैनी. मच एंड मैनी ऑल्सो indefinite numeral determiners. Much for quantity and many for number. Many shows number and is used, and much show for quantity. And in interrogative and negative sentences we use of many. Did you see many persons at the dinner? Here person, person is here number, we can count it na, so we will use here many. She has not sold many sums. She has not sold many sums, so some we can count, then we will use here many. As the subject of a part of the subject, या तो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है. मैनी हैव बीन रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड. अब यहाँ पे हमने देखो काउंटेबल का ही लिया. हियर यहाँ पे एक सेंस रहेगी कि मैंने यहाँ पे हमने बहुत से पर्सन्स की, स्टूडेंट्स की, पीपल्स की हमने बात की है कि बहुत सारे ऐसे थे जो रिस्पेक्ट किए गए और एडमायर किए गए. उनकी एडमायर मीन्स प्रेज की गई, प्रशंसा की गई. मैनी ऑफ अस वेंट टू सी द फेमस एक्टर. इन द एक्सप्रेशन अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, सो मैनी, टू मैनी,
many a, as I have known her for a great many years. I have आई हैव नोन हर फॉर अ ग्रेट मैनी ईयर्स। भाई मैं उसको बहुत मतलब काफ़ी सालों से मतलब फेमस हो चुकी है, इतनी ईयर से मैं उनको जानता हूँ। इवन इफ वन पर्सन इज हर्ट दैट इज वन टू मैनी। मैनी अ गुड मैन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक। कहने का मीन है बच्चे, अगर ये वर्ड अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, सो मैनी, अब तक हमने क्या कहा कि मैनी प्लूरल में रहेगा, बट यहाँ पे अ वर्ड आ रहा है, इट मीन्स हमने उसको एक एज एन एडजेक्टिव यूज किया कि अ गुड, अ ग्रेट, सो मैनी, टू मैनी, मैनी अ। In other cases, in all other cases, replace many by a lot of, a great number, plenty of। ठीक है। Have you read many books? Yes, I have read a lot of books। जब हम यस आंसर देंगे ना, आंसरिंग टाइम में हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हैव यू रेड मैनी बुक्स? यस आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स। नो आई हैवंट read a great number of books। Much shows quantity and is used in the same way as many, much, great deal of, and plenty of, great deal of and plenty of। You can see here, does your cow give much milk? Milk is a quantity, we can't count it, okay? Yes, she gives a lot of milk. Yes, she gives a lot of milk. No, she doesn't give a great deal of milk। Many is followed by plural number while many takes singular number after it। मैनी है वो ज़्यादातर तो फॉलो किसको करती है? प्लूरल नंबर को, बट समटाइम्स इट टेक्स अ सिंगुलर नंबर ऑल्सो। ओके, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन रिप्लेस्ड बिफोर इट। मैनी प्रॉब्लम्स हैव कम अप सडनली। मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनशीन। ये आपको सब्जेक्ट देखेंगे, अगर प्लूरल की सेंस दे रहा है देन प्लूरल वर्ब, एंड सिंगुलर की सेंस दे रहा है देन सिंगुलर वर्ब। ओके, आफ्टर दैट आता है हमारा फ्यू, लेस एंड सेवरल। few, less and several। Indefinite numeral determiners। few is the opposite of many। few है वो opposite है many का, यानी कि few we will also use for number। less is the opposite of much because less is also used for the quantity। few denotes number and less denotes quantity। several means more than two but not many। सेवरल का मीन क्या रहेगा? मोर देन टू, दो से ज़्यादा, बट मैनी की सेंस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। वी हैव फ्यू हॉलीडेज ड्यूरिंग दिस टर्म। फ्यू हॉलीडेज, हॉलीडेज हियर काउंट नंबर, एंड अ फ्यू पर्सन अटेंडेड द मीटिंग। अ फ्यू पर्सन्स अटेंडेड द मीटिंग, जैसे कि एक पेयर होता है ना, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। शी पेज लेस अटेंशन टू हर चिल्ड्रन। several letters arrived this morning। अब हम ये नहीं कह सकते many letters arrived this morning, it means no, more than two, maybe three, four maximum। several letters arrived this morning, they said goodbye and went their several ways। next, little and few, indefinite numeral determiners। little means not much, hardly any, ज़्यादा कुछ नहीं, नेगेटिविटी की सेंस में हम लेंगे, जीरो के बराबर। फ्यू मीन्स नॉट मैनी। मैं कहूँ इन देर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास बट ओनली जस्ट 1 and 2 प्रेजेंट, तो मैं क्या कहूँगी? फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन माई क्लास। नॉट मैनी, हार्डली एनी। इन अदर वर्ड्स लिटिल एंड फ्यू मीन प्रैक्टिकली नथिंग। अगर हम लिटिल और फ्यू की बात करें तो लिटिल और फ्यू का क्या रहेगा कि नेगेटिविटी की ही सेंस में लेंगे हम, मीन्स nothing, zero। little is used with uncountable nouns while few is used with plural countable nouns। there is little water in the pot, मतलब न के बराबर, hardly any। there are few buses running, there are few buses running। he had little money। I have few friends। few friends means ये कोई एक आधा, मुश्किल से, hardly you can say। there was little hope of a recovery। few women can keep a secret। few women can keep a secret। a little and a few, अभी तो हमने क्या किया? little and few। next, a little and a few make a positive sense। a little है वो क्वांटिटी को शो करेगा और few है वो सर्टेन नंबर को। ये
you can say uncountable things. I shall return the money in a few days. Means in some days, a little knowledge is a dangerous thing. Some but not much. She has a little money left. She has a little money left. He has a few books of his own. Next हमारा the little and the few imply two statements, one negative and the other positive. The little means not much but all of that much. The little का मीन क्या रहेगा कि जितना हमारे ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना है वो सारा. Few का वही रहेगा नंबर में not many but all of them. She wasted the little money she had. इस तरह से एक है ना आपको कंडीशन मिलेगी यानी कि जितना उसके पास था ना वो सारा का सारा मनी उसने क्या किया स्पेंड कर डाला. वी लॉस्ट द लिटिल होप ऑफ अ रिकवरी. जितनी जितनी हमारी होप बची हुई थी वो सारे की सारी हमारी लॉस्ट हो गई. आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड. मेरे पास जितनी बुक्स थी वो सारे की सारी मैंने पढ़ ली हैं. ज़्यादा नहीं पढ़ी बट जितनी थी उनको सभी को. शी स्पेंट द फ्यू रुपीज़ हर मदर गेव हर. ठीक है. द लिटिल एंड द फ्यू इम्प्लाई टू स्टेटमेंट्स वी हैव डन. नेक्स्ट आता है हमारा ईच एवरी ईदर एंड नीदर. ईच एवरी ईदर एंड नीदर. ओके. Each, every, either and neither are used with a singular noun. Each, every, either and neither. This is the distributive numerals. Uh, these are used with a singular noun. Each is used for two or more persons. Each है उसका यूज हम two or more persons के साथ करते हैं. While every is used for more than two things. Okay. Every का more than two things. ये just for two or more persons. Either means any one of the two. Neither means not any. यानी कि either नेगेटिविटी की सेंस में रहेगा neither नेगेटिविटी की सेंस में. either पॉजिटिविटी सेंस एंड neither नेगेटिविटी सेंस. ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक ऑफ हिज ओन. थोड़ा सा ध्यान देना. ईच एंड एवरी. Each and every refers to all the members of a group of person and thing. मीनिंग सेम है थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. ईच ग्रुप की हम बात करेंगे इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे ईच में. एवरी में उस होल ग्रुप की हम बात करेंगे. ईच एंड एवरी रेफर्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड थिंग्स. वी यूज ईच टू रेफर द मेंबर्स एज इंडिविजुअल्स एंड एवरी टू मेक अ जनरल स्टेटमेंट. ये तो एक एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी की बात करेगा ईच. बट एवरी है वो पूरी जनरल स्टेटमेंट की बात करेगा. फॉर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट इन द क्लास हैज अ बुक. यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में उन सभी के पास बुक है. बट एवरी मेंबर ऑफ द क्लब हैज़ कम. यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात कर रहा है कि एवरी मेंबर ऑफ द क्लब हैज़ कम. ईदर कैन मीन वन और द अदर ऑफ टू थिंग्स. नीदर मीन्स नॉट वन और द अदर. Neither statement is true. Neither boy admits his mistake and the host sat on either side of the guest. So my dear students, I hope you will listen this video carefully and you will understand. If you have any doubt, then you will discuss with me in our online class. Thank you. Have a nice day. This is the exercise and these all are solved. First of all, these are related to an article a, an or the. Dash auditorium has been built in our school. Honesty is dash best policy. The Ganges is dash holy river. Hari is dash honorable man. I saw one-eyed self. So first of all you will try and after that you will match these with answer keys. Okay. These are the exercises. Exercises first, second, third. Okay.